हैप्पी संडे एवरीवन. बियर पे बातचीत इज बैक एंड वी आर बैक. तो यार देखो, बियर पे बातचीत पे हम काफी दिन से बातचीत कर रहे थे कि बियर पे बातचीत कब वापस लाएं और हम कब लाएं, क्या बात करें. तो हमने सोचा कि यार इतना जो मारा मारी चल रही है सोशल मीडिया पे, ये जो एक आदमी ने हमको ज्वाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. यू नो बट इतना जो मारा मारी चल रही है सोशल मीडिया पे अबाउट द मिडफील्ड, जो पागलपन चल रहा है हमारा मिडफील्ड के बारे में, उसके बारे में हमने सोचा कि थोड़ा बात करें और हम उसमें थोड़ा सब्सटेंस भी लाना चाहते थे क्योंकि बियर इन्वॉल्व है. तो हमने सोचा कि थोड़ा क्वालिटी भी लाया जाए कॉन्वर्सेशन में, और क्वालिटी बेसिकली आई है हमारी थ्रू ऋत्विक, है ना. तो ऋत्विक, वेलकम बैक टू मेनेस इन द मॉन्क. Always a दारू pleasure, तो Nidhi पीता bhai. नहीं है, कैसा लग रहा है? Always a pleasure. ऑलवेज अ प्लेजर. मतलब अभी लेकिन देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ प्लेजर मानस अराउंड द, मतलब, बट क्या बोलता है मानस, तू तो स्क्रीनिंग वीनिंग गया था, कैसा लगा मैच? First of all, Rithwik, thanks, bro, for joining in once again. And yeah, happy Sunday. Happy beer पे बातचीत everyone. Today I'm not drinking. Very, very tired. पहले मैं ये clarify कर रहा हूँ before. यार, yesterday's game ना, दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ. ओवर रिएक्शन एक चीज डिस्कस हो रही थी काफी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. आई थिंक ओवर रिएक्शन रिजल्ट पे हुआ है, परफॉर्मेंस पे नहीं हुआ है. हम्म. परफॉर्मेंस पे जो रिएक्शन हुआ है वो करेक्ट है, बिकॉज द परफॉर्मेंस yesterday was terrible. Like टेरिबल. it was terrible. And I am निधि, ऋत्विक, तुम दोनों तो जानते हो और शायद से जो भी देख रहे हैं, they know that we are thorough optimists. Like we rarely criticize. We never hate on a team, and we will never hate on a team ever. But yesterday was poor, man. The performance was poor. But I think overreaction इस चीज पे हो रहा है कि चांस ही नहीं है कुछ, टीम बर्बाद है, सब फकौल हाँ. है. मतलब वो ओवर रिएक्शन हुआ है. बट हाँ. अगर आप गेम के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला है, वो जस्टिफाइड है. नहीं, बिकॉज कल 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 आई भी सॉरी, नहीं. कल कल वाज वाज वेरी वेरी टफ टू वॉच यार. और क्या होता है ना कि आप पहली गेम ऑफ द सीजन में अगर आप इतना, अरे चांस था वेस्ट हैम को, एनीवे, ऐसे खेलो, बहुत बहुत ही डिमोरलाइजिंग लगता है. देयर इज नो डिफेंडिंग यस्टरडे का परफॉर्मेंस, बट मैं एक चैट आया है और ये आज आने वाला है, तो मैं इसके ऊपर एक बार बस बात कर ले रहा हूँ. देखो भाई, 4 मिनट का इंटरव्यू था क्लॉप का. ठीक है, क्लॉप अगर वो सुनोगे ना तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट असेसमेंट्स ऑफ अ गेम. अब वो आप नहीं सुनोगे, ये भी मुझे पता है. ठीक है, रियलिटी ये है कि आपको उसमें से 4 लाइन बोल दी, और अभी सोशल मीडिया ज़ॉम्बी बिहेवियर, है ना. अब इसके बाद क्या होगा कि क्लॉप विल गिव शॉर्ट स्नाइपी आंसर्स, तो उसके बारे में भी रोएंगे लोग कि ये तो बहुत रूड है, ये तो स्नाइपी आंसर्स लेता है, ये वो करके. देखो, पिच ड्राई था और क्लॉप ने ये भी बोला, वी डिडंट डिजर्व एनीथिंग फ्रॉम द गेम. ठीक है, गो एंड वॉच दैट इंटरव्यू. आई नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल 4 मिनट्स का अटेंशन स्पैन इज आस्किंग टू मच, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. बट अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ट्रोल करना ठीक है, बट थोड़ा जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द मैन वाज ट्राइंग टू से. बट अगेन, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम सोशल मीडिया. बट यही रियलिटी है. और एक और रियलिटी बता दे रहा हूँ, क्लॉप को अपना मैनेजर बनाने के लिए मोस्ट फैन बेसेस विल गिव देयर लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, अ लॉट ऑफ थिंग्स दे विल. जितना बोलना है बोलो. क्या बोलता है ऋत्विक, पोस्ट मैच असेसमेंट अबाउट क्लॉप? I think he was pretty fair. मतलब 4 मिनट के इंटरव्यू में से जैसे आपने बोला है, like people picked up 4 words. What can you basically संकेत, express प्लीज from लिसन it? टू द इंटायर इंटरव्यू. Please listen Exactly. to the entire interview. I Right? can even share the link. I मतलब I I just watched it guarantee today. I guarantee तुमने नहीं देखा है. हाँ, सॉरी. No, because he was actually really pissed with the team's performance. So he actually blamed the team rather. He did not blame the referee
when he could have blamed the referee for the Henderson. मतलब वो first goal के लिए there was a hint of a foul on Henderson by Palhinha, and for the second goal penalty का भी, I mean it's a penalty obviously, but he could have probably blamed, but he said you can't really blame the referee. It was all on us. It was the attitude, it was the mentality in which we started the game. We didn't even have control over the game at any point. Only probably during that 15-20 minutes where after Darwin came on and we scored that goal was I think the only period in the game where we really had some momentum over Fulham. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल अनिर्बान, थैंक यू फॉर द सुपर चैट. तेरा कोई क्वेश्चन लेकिन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा. अब तू भूल गया कि तूने डाला नहीं, पता नहीं, बट इफ यू पुट योर क्वेश्चन विल टेक इट. बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट. थैंक यू सो मच अनिर्बान. बट निधि, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. वो जो पोस्ट मैच के बारे में हवा आती है, पिच पुश रहा है, ये वो बहुत लोग बोलते हैं. बेस्ट चीज मेरे को मालूम है क्या लगता है कि लोग को लगता है लाइक क्लॉप पाप है यार ये सब चीजों में. he takes the entire attention away from the players and he takes it on himself. Deflection. Basically no one should criticize the players. No one is criticizing, like apart from our fan base जो justified है because they're questioning Trent for the first goal. Henderson was, और उस पे I'm sure हम बात करेंगे, Henderson was very 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 average yesterday. But no one is talking about it ना. सब लोग क्या बोल रहे हैं? क्लॉप रो रहा है, क्लॉप ने ये बोला. बेसिकली उससे सब एक जो भी बोला सब अभी उसके बारे में बात करें. No one's talking about the players, you know. I'm talking about the media and the opposition. You really think Klopp doesn't know what he says in a post-match conference? He's done like 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 of these, man, already. I mean, come on, man. Like, he's Jurgen Klopp. And even if whatever's happening, you think he cares what people think if he feels the pitch is dry? Like, like I don't care. But in a very serious way, no one's talking about opposition media. No one talking about what went wrong. People are just saying, "Oh, Klopp ne ye bola." So the entire attention is toward Klopp now, and that's what makes him a good manager as well, man. I don't know whether Rithwik will agree. I agree. I actually agree because most of the comments he makes sometimes when the team loses, it's it doesn't make any sense. And when you think about it later, it's like the players don't get a lot of blame because of his comments, because all the attention goes towards him and people start you look at most successful managers. This is a very big art, the art of deflection. सब लोग करते हैं, बट ये है कि देखो रियलिटी ये है कि मीडिया विल लैप इट अप क्योंकि क्लिक्स मिलता है, अटेंशन मिलता है, रेवेन्यू आता है, एंड पीपल आर मोर देन हैप्पी टू लैप इट अप. बट उससे मूव ऑन करते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन है यार ऋत्विक. Hi guys, you all are doing a wonderful job. Just wanted to know from you guys if Chouameni would have agreed to join us, would we have still gone for Nunes? So first of all, Anirban, thank you so much for the super chat here. सुपर चैट के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. बट तू क्या बोलता है ऋत्विक, इफ चुआमिनी वुड हैव अग्रीड, और जो की बात हो रही थी कि एक डील अग्रीड था हमारा, तेरे को लगता है तब तो फिर नूनेज आता है या हम नूनेज के पास वी वुड हैव गॉन? I don't think we would have spent like big money on two players in the same window. I can never like 100% be sure. Lekin what I feel is ki we were really interested in Chouameni, and then player wanted to move to Madrid at the end. And if we had gone for Chouameni, I don't think we would have gone for Nunes. But Mane was leaving anyway, so we would have gone for some attacker. But I don't think we would have taken the big punt on Nunes. ऋत्विक एक बार म्यूट करेगा? आई थिंक तेरा ईयरफोन्स की वजह से देयर इज अ नॉइज, लाइक ऐसा विस्लिंग के जैसा. अभी अनम्यूट करके बोल कुछ. Is it fine now? है, थोड़ा है, आ रहा है प्रॉब्लम. It might be from your end, Nidhi, because I'm not getting it at all. Because when he mutes, I can't hear that. Your ideal midfield versus Palace करेंगे यार, इसके ऊपर भी बात करेंगे.
अरे यार अनुराग बोल रहा बुलाओ चारिज़ाट को मानस फॉर मी ओनली चैंपियंस लीग मैटर्स। चारिज़ाट पता नहीं यार कौन है, कैसे बुलाएं उसको हम लोग। बट आप आए हो वही बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट यार अनुराग। थोड़ा बातचीत करते हैं आपस में, बियर पे बातचीत चल रही है। तो थोड़ा बट यार मानस मैं तेरे से पूछूंगा, तूने जब देखा ये मतलब आई डोंट नो तूने कितना देखा क्योंकि तू स्क्रीनिंग पे गया था, तो मतलब मोस्ट ऑफ द आउटरेज यू माइट हैव मिस्ड आई एम गेसिंग, बट व्हेन यू सॉ द आउटरेज टुडे परहैप्स तेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जैसे मैंने पहले बोला निधि, लाइक आउटरीच और लाइक criticism based on the performance was justified because we were poor yesterday. But मेरे को बट देन अगेन यार मतलब वही हो गया है कि अगर एक पुअर परफॉर्मेंस इज ऑल डूम एंड ग्लूम, हाँ और वही दिखा। और ये आई एम नॉट, इट डजंट सरप्राइज मी एनीमोर। और मैं अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी दैट शाइनिंग लाइट, लाइक बीइंग थरो ऑप्टिमिस्ट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कल खराब खेले, वी डिजर्व टू गेट अ पॉइंट और लूज व्हाटएवर। बट मेरे को यार मतलब इतना गाली गलोच, like people were tagging me and saying कि I've told you 1,000 times Henderson should be nowhere near this team, like Trent can't defend, WhatsApps आ रहे हैं told you million times Trent can't defend, it's like and क्या होता है ना कि जब भी आप लिवरपूल सपोर्टर हो और लिवरपूल फैन ही आपको ये सब बोल रहे हैं, so it feels like told you so mentality, like हाँ मैंने बोला था तू नहीं। अरे अल्टीमेटली हम तो लिवरपूल सपोर्टर्स है ना, तो हमें तो यार मतलब ट्रेंट वाज एट फॉल्ट फॉर द फर्स्ट गोल, आई नो। मतलब हेंडरसन या हैड एन एवरेज गेम, बट अभी आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय इट एनीमोर निधि। Now I just, now it is just part and parcel of life, because of social media, it is part and parcel of life, we have to deal with it as fans। कभी कभी हम देख, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सब दूध के दूल्हे इधर, हमारे नहीं भी नहीं बायसनेस है, हमारे भी बायसनेस है। बिल्कुल nice है। हमारे बायसनेस शायद से प्रो हेंडो होगा, प्रो एफएसजी होगा, कोई कोई लोगों को वो फ्रस्ट्रेटिंग लगता रहेगा, यू नो नहीं नहीं सो देख भाई हर ओपिनियन की चीज का बात है, बट इट डजंट सरप्राइज मी एनीमोर जो मैंने आउटरेज देखा। देख ओपिनियन की बात सही है बट कल मैं लाइव कर रहा था ऋत्विक, एंड तू भी इसमें चाइम इन कर, बता मेरे को कि व्हाट इज इट दैट यू थिंक। फॉर एग्जाम्पल देख जैसे कल मैंने हेंडरसन की बात हो रही है ना, तो हेंडरसन के बारे में हम लोग ने कल बात की थी, मैंने बोला कि हेंडरसन वाज वन ऑफ द टू वर्स्ट प्लेयर्स ऑन द पिच अकॉर्डिंग टू मी। हेंडरसन एंड ट्रेंट बकवास, मतलब एकदम भी अच्छा नहीं खेले। once you've said that, once you have accepted that, once you, so I don't know what is it that people want to achieve out of that discussion, right? Okay, fine, Henderson was bad, he was very poor, Trent was very poor, I think the entire team was poor, but these two stood out in terms of being bad। बट क्या चाह रहे हो, मतलब क्या चाह रहे हो कि मतलब ये आर्सेनल फैन टीवी तो नहीं बनेगा भाई, मतलब अगर वो उम्मीद है तो नहीं होने वाला है। इज नॉट गोना बिकम, बट एक एक आर्गुमेंट और भी है ऋत्विक, अबाउट मिडफील्ड की बात कर रहे हैं तो हेंडरसन की बात हो रही है एक और, कि हेंडरसन हैज बीन पुअर फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डू यू फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट एग्री विद दैट? This is a very sensitive topic क्योंकि I mean Henderson is a huge fan favorite. He's the captain of the club, and I mean he's thoroughly deserved everything that's come his way, all the praise that's come his way, and even the manager, अगर Klopp हो या Linders हो, I mean everyone praises him, even his teammates does. Lekin I think in terms of performance or form, it has dipped probably from the second half of last season. मतलब I mean it's not something that you can blame him for because uh, I mean you can't really expect Henderson to be Thiago or Keita doing all kinds of stuff because he was really good at setting the tempo of games. I mean tempo in the sense of pressing, chasing balls, and just distributing the ball around. He was never press resilient. He was never technically very good. So I think Avi, because of the injuries that he's had, which has taken a huge toll on him, he doesn't have that. You could kind of say that he's kind of lost his legs
to an extent. So it's a very gray area, I would say, because I would say that Henderson is a droppable player at the moment. I don't think 100%. he's he's 100%. he's not. 100%. I mean, when if people say that you could drop him, that makes sense. But I don't see a big amount of criticism being fair on him. मतलब it's just, I mean, मतलब ऐसे ही criticize करना, that's of no use. I mean, it's fair if you say okay, we want to see Henderson on the bench, लेकिन उसके बाद people don't have anything to add. That's where you ask like, okay, Henderson को bench करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, मतलब there's nothing for people to say after that. Right, but मैं actual reactions बोल रहा हूँ मानस, मैं bench की भी बात नहीं कर रहा हूँ. There were comments like, how the hell is Henderson still a Liverpool player? That is overreaction. That is the dictionary definition of overreaction. And here I would just, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि this is now a part and parcel, like I said, of watching a sport and everyone having an opinion. And please don't get me wrong, I am no one to say कि किसी का opinion ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा है, किसी का कम है, but ये अभी part and parcel है bro, ये part and parcel है. आज मतलब with all due respect, विराट कोहली भी गाली सुन रहा है ना आज, मतलब स्टीवन जेरार्ड, वो I have heard opinions that Steven Gerrard is in the Premier League history the most overrated player ever in the Premier League history. मैंने ये भी like मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि तो फिर Twitter.com नहीं, मतलब ये होना ही है ये, और तो मैं सरप्राइज क्यों नहीं हूँ, बिकॉज आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस, यस्टरडे हेंडरसन वाज बैड, तो उसके बाद ये सब देखने मिला, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ यार, मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ये सब देखने मिला, सुनने मिला, बट a lot there's, I mean, कोई पूछ रहा था, किसी ने कमेंट में लिखा था कि how will I mean, what are the positives? Positives are two: Darwin Núñez and Mohamed Salah. Mohamed Salah had a quiet game and still he scored one and assisted one. Darwin Núñez came off the bench, scored one and luckily assisted the other. But मेरे लिए तो भाई यही दो पूरे गेम में पॉजिटिव्स थे, और कुछ पॉजिटिव नहीं था भाई. एक ऐसा स्पेल था, आई रिमेम्बर निधि, ऋत्विक, मैं से मैच देख रहा हूँ स्क्रीनिंग में, और भिंडी हम लोग पास ही नहीं कर पा रहे हैं. मैंने बोला कि सफेद शर्ट सामने दिखता है, हम लोग थड़पड़ा क्यों जाते हैं, ये रियल मैड्रिड नहीं, ये फुलहम है. लाइक मैंने बोला सफेद शर्ट पहनो ही मत, कोई मतलब कोई पहनो ही मत भाई. 100% ट्रू. मतलब आई थिंक दिस वाज लाइक इन द फर्स्ट हाफ, मतलब सारे बॉल्स either we were under hitting it, नहीं तो हम उनको दे रहे थे midfield में. That's another point that Klopp added on. We weren't even giving the ball away in the final third. We were giving away like in the midfield third या अपने defensive third में. You saw that second goal, right? मतलब it all starts from Matip like taking a very badly calculated pass. मतलब तो that got intercepted and they got the penalty. So our passing was really poor yesterday. मतलब कोई composure नहीं था. And at one point, like in the first half, I thought that the players didn't want to play. मतलब like it was like very slow. We were very slow to react. So normally our press is probably on point, but yesterday when Fulham won the ball back, we were slow to press. And by the time we got there, they played through our midfield very easily. So I mean, it's 100% on. I mean, 100% on the players. You can't. 100%, no doubt about it. थोड़ा मतलब मेरे पीछे स्क्रीनिंग में ऐसे 2-3 लोग काफी पिए हुए थे, तो कोई बोलता है यार साला मित्रोविच भी बेंजीमा बन गए हमारे अगेंस्ट. मेरे को इतना हंसी आया तो मित्रोविच को चैंपियन व्हाइट जर्सी पहना दो स्ट्राइकर को, वो बेंजीमा बन जाएगा हमारे अगेंस्ट. Anurag says, Nidhi and Manas, I was the biggest Arsenal fan on earth, but when this fucking man called Jurgen Klopp came, I started loving Liverpool, stopped watching Arsenal, now always watch Liverpool. मैं क्या बोलूं भाई. So thank you for watching Liverpool. Thank you for being on our stream. Sorry, हाँ. Yeah, thank you for being on our stream. Vipin यार, thank you so much. Vipin बोलता है, thank you so much for the super chat. Vipin बोलता है, if you are having a bad day, watch
Man U because they'll brighten you. अरे यार देखो बाय द वे मैन यू नहीं बोलना चाहिए यार, इसके ऊपर मोहक ने एक वीडियो भी बनाया और मैंने भी बात की है। मैन यू नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इट इज कंसिडर्ड अनलकी, इट इज रिलेटेड टू अ वेरी सीरियस इशू, इट इज रिलेटेड टू द म्यूनिक एयर डिजास्टर। उसके बाद से तो म्यूनिक एयर डिजास्टर के बाद से शेमफुली अस हमारे फैन बेस ने भी एक चैंट्स बनाए थे इसके ऊपर, और लीड्स ने भी चैंट बनाए थे। तो अब वो चैंट्स क्या है मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, बट मैन्यू नहीं बोलना चाहिए यार। अब मतलब इवन इफ यू आर अ लिवरपूल फैन, यूनाइटेड फैन, व्हाटएवर इट इज, मैन्यू नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इट्स लाइक वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बट निधि थैंक यू फॉर द, ऋत्विक निधि ऋत्विक हम he लोग didn't mean it, he was just joking. हाँ। या ऑफ कोर्स हम लोग मिडफील्ड के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे अभी। देख यार ऋत्विक, हमने काफी काफी बात किया है अबाउट सीजन शुरू होने के पहले, जब सब फिट थे तो 9 थे अपने पास, 9 मिडफील्डर थे। अभी अभी इशू क्या हो गया है कि चेम्बरलेन इज आउट टिल अक्टूबर, कर्टिस इज आउट फॉर अ मंथ, month. थियागो month, I think 3-4 weeks. I think I could be wrong, but Thiago looks months के Hmm. रेंज में। Hmm. I was नाबी केटा को अब अभी I know you are a big admirer. I like Naby Keita as well, but मतलब अगर निगल नहीं होता तो बुखार हो जाता है। मतलब it's just so frustrating. Now we are struggling, man, to like from a position where we could argue कि चल ठीक है नहीं लिया, to a position where कि if hypothetically Henderson had a shit game, he should be dropped. He is an automatic starter now because अगर थियागो नहीं है, कर्टिस नहीं है, चेम्बरलेन नहीं है, नाबी केटा नहीं, तो खेलेगा कौन? खेलना पड़ेगा। सो अभी ऋत्विक, तेरा एक ट्वीट देखा था, 2 मिडफील्डर्स, कैन दैट हैपन नाउ? डू यू थिंक वी विल डू समथिंग लाइक दैट? मतलब कौन सा ट्वीट मनोज भाई? I think you tweeted something कि we will play with Fabinho / one more and then play Carvalho or Elliot and then Diaz, Salah हाँ, and Darwin अच्छा Núñez. अच्छा, A okay. 4-2-3-1 type, something like that. So, I mean, I thought we would probably move into that kind of a shape. मतलब season, मतलब शुरू होने से पहले, before the pre-season. लेकिन after seeing the pre-season, it's more of been the 4-3-3. Even कल, it's more of been the same. Maybe we might go to a 4-4-2 at times, out of position to defend, or if you're chasing a game, we might bring on 4 attackers and go 4-4. But it's the shape. Main shape is going to be kind of a 4-3-3. मतलब basic formation. I think we'll go with 3 midfielders itself. I mean, wo 4-2-3-1 B, you can probably alter it and make it a 4-3-3 with Diaz, Nunez, and Salah up front being the front three. For in the midfield, Thiago's not fit now, so it's a very tricky choice on who you could start on the left side. I would say start Elliot That's on a the massive loss ना, लेकिन Thiago not being there, bro. Like, अरे यार because पता है मतलब इट्स, मतलब मैं आई वाज, वो देख के भी जब थियागो इंजर भी हुआ तो वो एकदम अपसेट था यार। एंड इट्स यू यू जस्ट नो कि यार इट्स अ लॉन्ग टर्म इंजरी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है यार। एंड थियागो मतलब यार, मतलब I mean, इतना अच्छा प्लेयर, he was having a bad day against Fulham. लेकिन City के against and the Community Shield, he was unplayable. He was unplayable. मतलब even physically, he was trying to. I mean, City players were trying to bully him, Rodri, etc. लेकिन he was showing strength. He was getting away from press. I don't think there's a single Liverpool midfielder apart from Thiago who can beat a press properly. So मतलब अभी people might target that weakness that we have. Lekin after Elliot came on, you could see those quick interchanges between Elliot, that triangle between Salah, Elliot, and Trent. मतलब कितने interchanges थे. Trent was moving more centrally as well, which is something I think look forward to this season. He's going to be in kind of a midfield position, and that's a risk we're taking. That's a kind of additional or evolution you could say that we are having as a team. So I would say Elliot as the right center midfielder is or has to be the way forward for us. On the left side, Thiago start करो. अगर Thiago नहीं है तो Henderson or Keita या Milner या Curtis Jones. I mean, it works.
I mean, I've seen a lot of people say that Carvalho might be a midfield option, but I don't think so. Especially because of the physicality. Hmm. Matlab, it makes sense for him to be, back up to that left wing position that Diaz occupies right now. So, and we have like a very injury ridden squad at the moment as well. Jota injured है, मतलब midfield का मतलब बोले मत. फिर Konate back में. I think Konate and Van Dijk is probably the preferred centre back pairing as well for us. So yeah, it's bad timing. मतलब I mean honestly, मतलब season शुरू होने से पहले I was going to write an article saying that Klopp was right. We don't need any midfielders this season. मतलब I had the title ready. I had the first paragraph ready. फिर I had some busy stuff going. अभी अगर तूने रिलीज कर दिया ना I, तो तेरे मतलब नहीं. I want to stay alive on Twitter. नहीं मतलब अभी अगर मैं मतलब वो तेरे नाम पे जो डेथ वारंट इशू होगा ना नहीं, but now in hindsight, Nidhi, नहीं नहीं uh, दक्ष नहीं नहीं चाहिए. in in hi- in hindsight, Nidhi, can you blame Klopp? Because I think like एक thing तो for sure है, जब भी Klopp is interested and wants a player, the owners are ready to back him. हाँ. Now, in hindsight, can we? I mean, we shouldn't, right? We shouldn't uh, criticize anyone, or should we criticize Klopp, or should we criticize the people who decided कि जाना चाहिए था एक और मिडफील्डर के लिए? अभी like निधि ऋत्विक ने एकदम सही बोला, like it's just bad timing, bro. Like literally टूर पे तो 37 पीपल चले गए थे, फिर अभी 7-8 लोग इंजर्ड हो गए रैंडमली, ब्रो. लाइक Sai, first of all, thank you for the super chat. Before Rithwik, you answer that, just wanted to say, this is where you miss Genie a lot, always fit and ready. यार देख मैं वो प्रोफाइल हम मिस करते हैं, but I think we have moved on from Genie. Genie has moved on from us. I don't think Genie is a real option at this point. I think Manas and Rithwik both agree with me. yes, Nidhi bhai is right. आई थिंक जीनी अभी ठीक है यार, वो चले गया अभी रोमा है लोन पे और उधर खेलने वाला है. आई डोंट थिंक हम लोग कुछ करने वाले हैं. Also you had सॉरी a ऋतिक. नहीं मतलब सिस्टम में भी शिफ्ट हुआ है लास्ट सीजन. मतलब there's been a shift where we are not depending on that kind of a player anymore. So I mean, it doesn't really make sense to bring Jenny back, or it didn't make sense to bring him back. मतलब एक नाम ऐड करना is not what, or people say that we just want a midfielder. मतलब it's not about just adding a body. So मतलब that's like Manas Bhai said, like we had what 9 midfielders before the season started. मतलब Fabinho है, Henderson, who can start at the number 6 role. Then you have like for the other two center midfield, you had Thiago, Keita, Curtis Jones, फिर कौन? Milner, Elliott, फिर फिर कौन? Ox, फिर ऑक्स, टाइलर मॉर्टन, Tyler Morton, हाँ. And we मतलब saw, I mean, नंबर्स थे. So I mean, you don't buy players without moving players on. I mean, what's the point of buy? Abhi, if we randomly buy any player just to fill that hole, and when everyone's back fit again, we have a large squad and we are leaving players out. I mean, and that's not healthy, and that's not something that I don't think a lot of managers would prefer either. It's not just Klopp that prefers a very small squad. It's other top managers as well. Don't want like a lot of players in the reserves who are capable of playing, on the bench or start for other clubs. So I think it doesn't make sense to add just a body. Matlab, right profiles, if you want to go, we have probably a few players that we could go for, Avi, but they're going to be expensive. And I'm not sure if we are going to take that risk now. फ्लोरियन नॉयहाउस के बारे में क्या बोलना चाहता है तू? बिकॉज हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग उसमें बात कर रहे हैं. बाय द वे, अगर किसी को पता नहीं है, ही प्लेस फॉर ग्लाडबाख, बोरुसिया मुंशनग्लाडबाख इन द बुंडेसलीगा. लास्ट सीजन
क्वाइट सीजन था उसके एक सीजन पहले ही वाज द थिंग यू नो इन द बुंडेसलीगा एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिम लास्ट सीजन थोड़ा क्वाइट हुआ ज्यादा स्टार्ट भी नहीं किया वो और Zakaria was supposed to be the next big thing Zakaria I think has joined Juventus if I'm not wrong but Yes, yes. वो प्रोफाइल क्या लगता है तेरे को अभी 20-30 मिलियन है स्टॉप गैप अगेन स्टॉप गैप तो हम तो करते ही नहीं है ऋत्विक I mean, Nohos, matlab, we were linked with him na 2 saal pehle. Then like last season, Gladbach had like a managerial change where they brought in Adi Hutter after Marco Rosa left for Dortmund, and Adi Hutter's style was completely different from Marco Rosa's. So I mean, it was like a more of a defensive setup where more conservative approach. So Nohos wasn't physically ready. I think there was a game where he was pulled out. Out of the pitch, like he was substituted and he was kind of in tears. So I was speaking to this guy named Luis Ambrose, who's like a Bundesliga expert, or I mean he's an Arsenal fan, but he's a Bundesliga expert. So he has like this nice newsletter called Football in English. So I did a podcast with him, matlab kuch mahine pehle for the Nutmeg Assist, and he was talking about how Neuhaus came back from those setbacks in the second half of the season and started getting some minutes. I mean, he's not a world beater. He's not someone who would, he's not a star signing, but I think he's pretty much capable of playing on that right side 8 role that we have, and I think he's in the right age group as well of players that we normally go for. He is an option if we get him for a decent money, but preferably, if it was up to me, I would try for Lucas Paqueta from Lyon. I mean, it's probably a bit of favoritism from my side because I love Paqueta, the way he plays. He has that flair that Brazilians have, and he's really good in that right side 8 role. So I was speaking to another friend of mine who's a Lyon and Arsenal fan. So he was talking about how Paqueta would be like a really good fit for us in that right side 8 role. Rithwik, you need to fix your audio, bro. Settings में जाके ऑडियो में जाके ना माइक और स्पीकर चेंज कर दे. बहुत ज्यादा आवाज आ रही है. तब तक मैं एक आध कमेंट्स ले लेता हूँ. तू म्यूट करके उसको चेंज कर ले, बिकॉज आई थिंक जो whoever is listening on earphones ना उसको प्रॉब्लम हो रहा है बहुत. अनुराग says स्टार्टिंग में झटका लगना अच्छा होता है. इट्स गुड ओमेन आई गेस. बिलीव मी, यू विल विन चैंपियंस लीग एंड वी शुड फोकस ऑन चैंपियंस लीग, नॉट ईपीएल. यार फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे मुंह में घी शक्कर, तू चैंपियंस लीग जीतने की बात कर रहा है. बट देखते हैं यार, अभी तो लीग शुरू हुआ है. अभी तो बहुत यार देखो, बहुत एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि ट्रांसफर्स के बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं. और यार देखो, ट्रांसफर में अब जैसे फ्रैंकी डे जॉन्ग की बात हो रही है, या फिर किसकी बात हो रही है, मान लो कि अभी कोई फ्रैंकी डे जॉन्ग बोल रहा था, कोई जूड बेलिंगम बोल रहा था. देखो यार, द क्लब दैट दे आर प्लेइंग एट, दे शुड बी रेडी टू सेल देयर प्लेयर्स ना. ऐसी बात नहीं. देखो अब जैसे मैंने आज ये ट्विटर पे डाला तो बोले ओ तुम, मैं बोल रहा हूं कि अगर इफ यू आर गोइंग टू यूज दैट आर्गुमेंट बाय सेइंग कि एवरी प्लेयर हैज अ प्राइस एंड वी शुड जस्ट गो एंड बाय इन द मार्केट, वी पे, फाइन, विल पे. और अच्छा, और जब क्लॉप को कोई प्लेयर चाहिए रहता है तो एफएसजी पैसा दे भी देता है, जितना भी चाहिए रहता है दे देता है. बट बेचने के लिए रेडी होना चाहिए ना इसमें. और आज मैंने डाला तो भाई चालू हो गया कि बॉस तुम बोल रहे हो कि मतलब हम क्या दूसरे क्लब्स के सेम लेवल पे हैं. मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लगता है वेस्ट हैम और चेल्सी सेम लेवल पे है क्या फाइनेंशियली, या किसी और भी लेवल पे? डेक्लन राइस नहीं बेचा ना उन लोग ने चेल्सी को. तो द सेलिंग क्लब हैज टू अग्री ना. फ्रैंकी डे जॉन्ग आप बोल रहे हो, बट फ्रैंकी डे जॉन्ग वांट्स टू स्टे इन बार्सिलोना, तो उसको कैसे साइन कर लोगे? एंड बार्सिलोना वांट टू कीप फ्रैंकी डे जॉन्ग बेस्ड ऑन लापोर्टा का स्टेटमेंट्स, तो कैसे साइन कर लोगे? अगर if Dortmund has said we've sold Haaland this summer, और हम we were not going to sell Jude Bellingham this summer, how are you going to buy them? तो ऐसे अगर रैंडम नाम बोलना है, मैं तो केविन डी ब्रुयने बोलूंगा भाई, कर लो साइन केविन डी ब्रुयने को. मेरे हिसाब से तो बहुत बार बोला है केविन डी ब्रुयने मेरे हिसाब से तो बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, कर लो साइन.
क्योंकि अगर रैंडम नाम बोल के बरेला, इंटर को रेडी होना चाहिए ना भाई बेचने के लिए, और बरेला को रेडी होना चाहिए ना भाई मूव करने के लिए। ऐसा नहीं होता है ना भाई, तुमको अगर कोई जॉब ऑफर हो रहा है तो यू ऑल्सो हैव टू अग्री ना भाई कि मैं वहां जाएगा। ऐसा मतलब, सॉरी मानस तू कुछ बोलने वाला था, बोल। मैं बोल रहा हूँ एक 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 ड्रॉ लगा है बस। हाँ एक एक ड्रॉ लगा है और ये सब बातें हो रही है। ऑब्वियसली मिडफील्ड की तो बातें काफी टाइम से हो रही थी, बट अगर वो हेंडरसन वो अंदर चले जाता उसका वो लास्ट अटेम्प्ट, भाई साहब लोग हेंडरसन के टैटू बना रहे होते लाइक हाँ मतलब देख, आई मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि it's too early in the season to have any sort of panic, and हम panic buy तो करेंगे नहीं. There's a lot more to look forward to. I genuinely feel this season. अगर last season देखो तो we've got 62 more games to go, but I'm sure we won't play 63 games this season. बहुत मुश्किल है. But yeah, just have a bit of faith. These are tough, not tough times. These are different times because of the injuries that we have. I mean, for all you know, Naby Keita will be back. So Naby Keita, Hendo, Fabinho खेल लेंगे next game और जीत गए Palace के against. Then we have United. Hopefully Jota will be back. So let's not get too negative too soon. I don't see. I mean, जैसे और मैं ये वापस बोल रहा हूँ कि like कल की परफॉर्मेंस के बारे में जो भी क्रिटिसिज्म है वो justified है because it was a shit performance yesterday. But yeah, nothing but good about it. आराम से थोड़ा चिल मारो like there's a lot to look forward to यार. And हम तो मिडफील्ड के बारे में बात कर रहे हैं श्योर अभी, बट ऋत्विक आई मीन आज 7th है. डू यू थिंक now considering Thiago is out for a few months, we expect him to be out for a few months, uh, Chamberlain was our backup, but see we would never sign a important midfielder because Chamberlain is injured. तेरे को लगता है can we sign a good midfielder or quicken the process because Thiago is out now? और ऑप्शंस क्या है? I don't see a lot of options at the moment. I honestly don't. Matlab, um, there are some really good midfielders that we could sign, but I don't think the selling club would be, looking forward to push them away and find a replacement. Matlab, because say like if you want Ismail Benacer from AC Milan, who's like a cracking player, lekin would Milan sell? They are champions of Italy. They are a Champions League team now, and Benacer is also kind of happy there. So would Milan want to sell right now and try to get a equally good replacement at this point? No. I mean, like Nijibai said, it's really hard to convince clubs to sell. We might be able to get some players or some clubs to sell if we fork out a few extra million, but that's not something that we would do. I don't think so. So But even if Thiago is out, अभी Thiago नहीं है ऋत्विक, तेरे को लग रहा है नहीं, we will not now go for someone in the, we've got 3 weeks remaining right in the transfer window, अभी भी नहीं करेंगे, तेरे को ऐसे लग रहा है? I think हम नहीं करेंगे, although I would love the club to buy one player. मतलब Paqueta is my preferred choice, but मतलब I would love a club to buy someone of that quality. मतलब नहीं होगा, that's reality. पकेटा मिलान में थोड़ा फ्लॉप हुआ था ना if I'm not wrong. But he went to Lyon and he's actually a really good player. अभी मतलब situations change, so yeah, so he would be a nice option. Another option probably, I mean, people are suggesting Yuri Tielemans, which I think is going to be a low risk option. Abhi. But isn't he too slow for Liverpool, Rithwik? That's the problem. Matlab, he's a bit slow, but it's very hard to to think of someone who will like perfectly suit that right sided eight role. Matlab, if we are targeting Bellingham and we are pretty sure that we might get him next season, we might definitely not buy anyone. Like we're definitely not buying anyone now. We're definitely not buying anyone in January either. We'll wait for next summer. मतलब Husam are available है Lyon से, and he's been on and off for a while now. He's the left-sided player. So yeah, I don't see a lot of options
being available. So I don't know. I honestly don't know. यार राहुल, मुझे नहीं आता यार मॉड कैसे बनाते हैं, मेरे को सीखना पड़ेगा. आई डोंट नो हाउ टू मेक पीपल मॉड्स यार. मैं सॉरी ले. नहीं नहीं, बोल बोल बोल, उसके बाद लेता हूँ. I was just thinking now, like even जैसे ऋत्विक बोला था, अगर हम लोग 4-3-3 खेले, एलियट है, अगर कर्टिस बैक आए, और हमने ये भी बोला था ऋत्विक कि दिस कुड बी द सीजन वेयर वी सी मोर ऑफ कर्टिस और एलियट और such players. See, you have to take the positive out of this situation now, because Thiago not being there, who is that player in our squad already? I'm not saying कि बाहर से साइन कर, हमारे स्क्वाड में थियागो टाइप कौन खेल सकता है? I don't Like, think I don't नहीं है think कोई. there's anyone. नहीं, मतलब someone who's probably a bit different, but uh, safe in position, really good at ball carrying, is Curtis. मतलब he is quality. If and this is a big if he manages to take his game to the next level, he's going to be unbelievable. And that is a big if, because he never gets consistent minutes, because we have other top players, and whenever there is a chance for him to start, he gets injured as well. So it's been pretty unlucky for him. And even at this point, abhi agar wo fit hota, तो I'm 100% sure he gets more minutes and he gets more, opportunities to impress club. Lekin there is no opening at the moment. He's injured too. So, and I don't think he's similar to Thiago, but probably in a different way. Someone who we can rely on to progress the ball to the final third. That's Curtis. I don't, and Naby Keita, of course, with his dribbling and ball carrying, but that's pretty much it. निधि, तेरे को क्या लगता है थियागो का लाइक फॉर लाइक तो बहुत मुश्किल है, लाइक because he is Thiago. I mean, even when he signed for us, we were like, oh, a new dimension in our midfield and whatnot, and which is the truth. जो हुआ है, जितना भी unfortunately थोड़ा कम हुआ है from what we wanted to see game time wise. I'm not saying influence wise, but now who तेरा आवाज गया मानस. who do you think is the guy that steps up in the absence of Thiago, or who needs to step up? See, Henderson has to step up his. See, the best thing about Henderson's performance is that it can only get better. Okay, from what happened. So वो ऊपर जाएगा. But we know what to expect. Is it Elliot? Is it Thiago? Is it Curtis for you? Oh, I hope so. I hope it is. I would say it's not a guarantee, but I would put my money on Elliot because दो चीजें हैं यार. एक तो लास्ट सीजन भी वो चालू किया था और उसका इंजरी यार ऐसा नहीं हुआ था ना कि उसका इंजरी कोई उसके बॉडी के, मतलब उसका कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम है. उसकी टांग तोड़ी गई थी, राइट? सो इट्स अ फ्रीक इंजरी. एंड कल भी वो जब आया तो ही मेड अ चेंज इनटू द सिस्टम. I think it is going to be Harvey, and I hope he steps up because he's a special player. Let's not, like, we were all over the moon, at least जितने लोग हम लोग ने पढ़ा था सुना था यार, Harvey Elliott is an absolutely special player. So I hope he steps up. And I think out of the given options, मैं frankly जैसे ऋत्विक बोल रहा था ना कि कार्वालियो को मैं भी वही इशू है. मैं कार्वालियो को I see him coming on late on the left side, लुइस डियाज के टाइम पे के जगह पे उस टाइप का कुछ पोजीशन. आई डोंट सी हिम कमिंग ऑन इन मिडफील्ड टू मच, राइट? तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी हावी अकॉर्डिंग टू मी, और एंड आई थिंक इट इज द राइट चॉइस. एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. हाँ, निधि सर, एक तो भाई सर वर मत बोला कर यार. शुड वी गो फॉर अ 3-4-3 फॉर्मेशन? नो यार, 3-4-3 इज अ वेरी डिफेंसिव. मतलब 3-4-3 में तुम समझ रहे हो, मतलब 3-4-3 में फिर what do we do with Virgil, what do we do with Robo, what do we do with Fabinho? मतलब 3-4-3 is a very, like, I don't know, very defensive
It's a very different dynamic. Matlab, I mean, we had huge issues at the back, matlab, those seasons spell, and still Klopp didn't go with a back three. He hates it. Yeah. He honestly hates it. मानस तू कुछ बोल रहा था? नहीं, you're on mute. You're on mute. मैं अगर कुछ बोलने आ रहा था मैं भूल गया, टोटली दिमाग से निकल गया, बिकॉज आई थिंक तेरे प्रीवियस पॉइंट की कुछ बात कर रहे थे तू कुछ, अनिल नहीं सॉरी, ऋत्विक, मेरे को एक मैसेज याद आया तेरा कि आज ही बात कर रहे थे कि यू जस्ट स्पीकिंग अबाउट क्या हो सकता है सीजन में. नाउ कंसिडरिंग the players that we have unavailable unfortunately now, and every point that you drop unfortunately in this league when Manchester City and jo jeete abhi, I'm literally just seeing Pep right now in his post match interview. Do you think with the injuries we have right now is eventually we're still gonna fight? Because हमारा point यही रहा है ऋत्विक हमेशा कि we've fallen short of Manchester City twice by just 1 point. Now these injuries have come. Do we have that enough, mentality monster thing to push, like get back on track and, you know, probably leapfrog City eventually? I'd say कि मतलब, okay, now we are already 2 points behind City, but don't let the gap be too big by the time we go to the World Cup. If we are within touching distance of City, if you're like maybe 1 to 3 points behind them, we're still in the race, I would say. Because last season we were like what 10, 11 points behind, although we had like a couple of games in hand. Like in that itself was like a huge gap, and then we had to hope and pray for City to draw points, which they eventually did, and something like that is going to happen. Like in agar hum like It's if funny, we now we are in that situation again. We want City to drop points one game. पहले मैच में I mean, matlab, if we are like right behind them, we are definitely going to be challenging. Like in the problem is, I mean, watching other Premier League teams play this week. Matlab, abhi aaj I watched like the United Brighton game. I mean, we can make fun of United for losing all I mean all over. Like in Brighton are so good, like so good. Matlab, midfield में the technical ability they have, like this Moises Caicedo who's amazing. Like मतलब वो लोग अभी भी एडम ललाना, पास्कल ग्रोस, सॉली मार्च, Moises Caicedo, and I think Trossard, Leandro Trossard. These five, these aren't like world beaters or anywhere near like top four quality, but they play like pretty well, and that's down to how Graham Potter has coached them. So मतलब this other team in Palace that we're going to play next week, who are again really good at football. Like they have like a really good amount of talent and a really young and solid team. So we are going to face these teams, and we might drop points again there because the quality of the league is going up. I think although the top two has been separated from the rest of the league for a while now, I think teams are trying to catch up. मतलब दूसरे टीम के भी recruitment has become smarter. They are becoming smarter, so they're trying to close the gap. आप Spurs का भी देख लो, मतलब under Conte, the signings that they made, they've kind of added depth to most areas on the pitch, and Kulusevski is on like a different level at the moment. They have really good attacking depth. Midfield, maybe they have like really good depth. They used to depend on like Højbjerg for 60, 50, 60 games Pele last season and season before. Now they have like Bissouma and other midfield players to step in. So I would say competition is tough. So it's important that we don't fall behind by a long distance. Matlab, I'm not sure that we'll be in the same level that we were last season. In the first half of last season, we were scoring a lot of goals. I don't see that this season. Like if we can somehow, you know, get wins out of games, and having someone like Darwin Nunez, a number 9 who is instinctively really good. Matlab, yesterday he came on, he was all over Fulham. मतलब भाई मतलब फर्स्ट 5 मिनट में ही, although he didn't do much in the first 5 minutes, उसका मूवमेंट अगर देखोगे ना, ऑफ द बोर्ड मूवमेंट, you would see something really special is going to happen with him. मतलब he's so good. When he gets technically better,
Yeah. I'm 100% sure he's going to be like one of the best players in the world. So we have players to actually get results, but the problem is again, मतलब अगर डिफेंस और अटैक में we have quality, midfield में we are short of it, and somehow every season it's something or the other, and it's always a matter of 1 or 2 points, sadly. So I would say having a great start is important. मतलब World Cup year भी है, so I don't think we lose a lot of players to the World Cup, right? So that's हाँ also positive. यार अनुराग, भोपाल आऊंगा यार। सी देख, भोपाल आने का मतलब अलग से प्लान बनाना पड़ेगा। हम इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स का प्लान है। आऊंगा, जल्दी आऊंगा। मानस, डू यू सी जोटा स्टार्टिंग राइट आफ्टर he's back की न्यूनेज म्यूट कर अभी दो? ना नूनेज को स्टार्ट नहीं करना बहुत मुश्किल हो रहा है. बहुत लाइक सच बात है। like Nunes against Manchester City as well, he came on, made a difference. Against हाँ। Fulham, came on, made a difference. Uh, or I mean, again, Firmino was pretty not visible against Fulham. I would start Darwin Nunes. और अगर देख जोटा का तो अभी भी 1 महीना दूर है बात. हम्म। So तब हाँ, तक न्यूनेज has to start. for all you know, Nunes has scored 3, 4, 5 goals for Liverpool already, and he becomes a show shot starter. मैं तो बहुत interested हूँ कि साला और नूनेस कैसे combine करेंगे, because उनका combination मेरे को जो भी मैंने थोड़ा देखा है, I have been really happy, and I see हम्म। signs कि they will thrive, they will bounce off each other. मेरे को ऐसा लग रहा है, because वो जो runs मारता है ना behind the shoulder, Darwin Núñez of the defenders, और साला की passing तो वो apparently selfish है, कभी pass नहीं करता, but उसकी passing तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है. And I see them, bouncing off each other. So I think Salah and Núñez might eventually, by the time Jota comes back, they might be like guaranteed सेट starters. सेट Yeah, या। like अभी जैसे साला has to start every game. So मेरा सिर्फ यही है. ऋत्विक, हमारे स्ट्रीम पे ना बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि लुइस डियाज हैज टू बिकम मोर क्लिनिकल, he has to score more goals. Another day, another game, Luis Diaz hit the woodwork. Another game where he was involved in a melee, he could have scored, he didn't. I'm not being critical, but तेरे को ये सब conversation, how do you digest such comments and conversations and discussions with Vicky? Output numbers should probably be more of Luis Diaz. Tera take क्या? I mean, I mean, I mean, initially I just think if it makes sense, and yes, I mean, people probably expect goals from Luis Diaz or assists from Luis Diaz, which is fair. मतलब माने भी करता था, मतलब माने used to have a decent amount of output. लेकिन I mean, if he does all the other things right, and if we have other players to score in, then it doesn't become that big of मतलब a matter. I mean, Luis Diaz की बात करें तो I think the problem with him is, I mean, it's not a problem, but if you see how I mean, if you see his progress after signing for us, he is improving game by game. I mean, मतलब हमने finished product को नहीं खरीदा. We bought in a player who's at his peak age or at his peak years, who's going to get better every year. मतलब आके ही you can't expect him to score 20 goals a season, although that would be great. And कल उसका shot जो that hit the woodwork, if you just see the shot, I wasn't expecting him to shoot, honestly. Matlab, the way he just बहुत ही tight turned, angle था. Yeah. the way he just set himself up to shoot was really, really amazing. And it's just a matter एग्जैक्टली। of time before those kind of shots go in. I'm स्टार्ट pretty गोइंग इन, sure. या। मतलब variance नाम की एक चीज है. You can't keep on missing a lot unless you're so bad. तो या। XG अगर build कर रहे तो it will come back, or it will get converted into goals for sure. So या। when the time comes, people matlab they'll start praising him. So I'm just calm about players who I kind of feel that who will do when I hear like bad comments about players like Diaz or even Salah. I just don't bother. मतलब ठीक है, आ जाएगा.
यार सैयद, थैंक यू फॉर द सुपर चैट फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब जोक्स असाइड, आई थिंक टेन हाग का पहला मैच था, तो मतलब हम अब हम राइवल्स हैं, तो हम चलो ठीक है बैंटर कर लेंगे थोड़ा बहुत। बट बेसिकली क्या है कि यू नो दे विल गेट बेटर, ये रियलिटी है। दे विल गेट बेटर विथ टाइम, ठीक है। um, Ronaldo didn't start today, Rithwik. I और saw. और अभी सिर्फ यूनाइटेड की बात की है, ऐसे ही केम ऑन, बट आई मीन, डू यू थिंक रोनाल्डो विल एंड अप स्टेइंग? I तेरे को think. कुछ सुनने में आया कि किधर जा सकता है, या मतलब ऐसा कुछ? I mean, I don't want to make this joke. Like, no one really wants him at this point. मतलब he's if if he joins any top club, मतलब PSG, तो they're definitely not going to want him. मतलब why? मतलब Galtier is trying to build something really special there, and in the first two games, it's been pretty evident. तो वो नहीं लेने वाला. Atletico, I don't think they really need someone उनके again to फैंस miss ने तो out. पेटिशन उनके फैंस ने तो पेटिशन वेटिशन कर दिया है यार, मतलब वो तो दे आर रियली अगेंस्ट इट। I mean, even at United, I think United might get better without him as a team. अगर Ten Hag को build करना है, but they need to get a striker first. Or I've heard that they're interested in Marco Arnautovic. They're putting in an 8 million bid for Arnautovic, which I'm laughing at the moment. लेकिन यूनाइटेड? Marco Arnautovic. Apparently, Ten Hag has worked with Arnautovic आज at रिपोर्ट some है ना place. अर्नाटोविच का। मतलब पुराना Stoke City player. He's at Bologna right now. स्टोक सिटी, वेस्ट हैम, चाइना में भी खेला है वो। Hmm. So they are putting in an 8 million bid for him. He kind of got like 10, 15 goals, I think, last season in the Serie A. So दैट्स yeah, इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। सॉरी, इसलिए मैं इसे मैं जब बिकॉज आया यूनाइटेड का, तो मैं जस्ट सोचा एक बार पूछ लूं तेरे को। मैं अभी जस्ट प्रीमियर लीग का देख रहा हूँ, कवरेज थोड़ा अलग हुआ, लाइक सेट वेट बदला है निधि, अगर तूने देखा है कि मतलब टेबल वेबल डाल दिया है, थोड़ा अलग हो गया है अपग्रेड, इस बार। वास्तु hmm. चेंज हो गया है। मतलब तो वो अपग्रेड, तेरे को लगता है प्रीमियर लीग के पास टेबल का बजट नहीं था निधि? क्या पता ब्रो, मतलब वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनको भी उनका भी नेट स्पेंड बढ़ गया रहेगा। COVID से finances बहुत कम. तो बाप रे। यही यार। बट ऋत्विक यार, एक एक बात बता, मतलब डू यू थिंक अभी जो सिचुएशन है स्क्वाड का, मिडफील्ड का, लेट्स ये स्ट्रीम तो मिडफील्ड के बारे में है। मिडफील्ड का जो सिचुएशन है, देख, थियागो इज आउट, इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म इंजरी, एंड as much as I hate to say it, I am sort of expecting that, because थियागो जब भी इंजर होता है यार, वो बेचारा लॉन्ग टर्म ही जाता है। तो केटा यार इल है। आई थिंक क्लॉप सेड टुडे दैट ही विल बी अवेलेबल फॉर पैलेस, एंड टू बी फेयर टू नेबी केटा, कि यार वो लास्ट सीजन था अवेलेबल, तो आई होप दैट कंटिन्यूज इन दिस सीजन। बट बट वो तो बेयर मिनिमम होना चाहिए ना, लाइक हाँ लाइक मतलब, बट उस अभी तो बट उस टू गिव हिम सिचुएशन में क्रेडिट, है ही वाज हम लोग अभी। अवेलेबल। हाँ, आई गेट बट व्हाट उस यू आर सेइंग। सिचुएशन में है हम लोग अभी, क्या कर सकते हैं। तो कर्टिस जोन्स इज आउट। तेरे को लग रहा है कि मतलब विद दिस we are okay, or we have to go out and buy it, मतलब I know I'm asking you to make a difficult statement, but तू क्या बोलता है? मतलब केटा. नहीं नहीं, मतलब अभी जो मिडफील्ड का जो स्टेटस को जो है, यू थिंक अभी हमको जाके मतलब मार्केट में एक डेस्परेट बाई करना पड़ेगा, कि यू आर नॉट हिटिंग द पैनिक बटन येट? I mean, it would be great if the club could, reach out to potential targets and see if there's any chance of us getting them अभी इस विंडो में. अगर नहीं है तो I would just say leave it. And I mean, मतलब एक और random body add करना is not something I would prefer, आई honestly. एग्री, आई एग्री। as much as we, जैसे ऋत्विक ने बोला अभी कि रैंडम बॉडी ऐड नहीं करेंगे, एंड Klopp would rather wait. I think Menace, I could be wrong. Wait for next summer and buy the player and give more minutes to James Milner. Like, abhi
क्या है ना कि कल जब मिलनर आया ना, सी मेरे को लाइक भाई कल मिलनर बेस्ट मिडफील्डर था, कल का बेस्ट मिडफील्डर वाज जेम्स मिलनर। लेट्स नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट। no, no, but no, वो that's because that's how poor we were. वो There's nothing, and I'm not taking anything away from Milner. I love Milner. Like, but now if we have to, if Milner comes on to change a game for Liverpool, we are इट्स not in the right place. बैंड। Milner, I am totally for Milner to come on last 15-20 minutes to safeguard the game. You know, that is what Milner is now in the team for. Milner comes on to make sure अगर हम 2-0 leading है, it stays 2-0. You know, do the dirty work and get the job done. Like, but I feel now Milner will probably get more minutes because of reasons that are injury prone and what. और मेरे को तो नैट फिलिप्स के लिए भी बुरा लगता है, बेचारा नैट फिलिप्स जाने वाला था बाहर, कोनाटे इंजर्ड हो गया, अभी अपेरेंटली नैट फिलिप्स को वापस हम लोग रख रहे हैं। मतलब वो बेचारा जाना चाहता है अभी, जैसे इफ यू रिमेंबर लास्ट सीजन, because Matip came back from a long term injury, Van Dijk came back from a long-term injury. Gomez came back from a long-term injury. Konate was new. So हमने नैट फिलिप्स को बेचा नहीं, थिंकिंग कि इतने लॉन्ग टर्म इंजरी से आया, नया प्लेयर है, कोई इंजर्ड होगा तो नैट फिलिप्स को रखते हैं। अब नैट फिलिप्स बेचारा जाने वाला था, कोनाटे इंजर्ड हो गया, तो अभी नैट फिलिप्स बिकम्स स्टेज नाउ। आई मीन या नैट फिलिप्स के भी बुलाया गया। सो वो ही है कि bodies comparing to what we want, and I don't see us, Nidhi. I'm तूने जैसे बोला था कि ऋत्विक को ही पूछा था, but I don't think he'll sign. करना चाहिए for sure, but नहीं करेंगे। यार प्रसाद मेरे भाई, रियल मैड्रिड शुड अग्री टू, व्हाई विल रियल मैड्रिड सेड सेल फेडे वर्ल्ड यार? वो उनका लॉन्ग टर्म, ही इज देयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, क्यों बेचेगा यार? मतलब एंड चलो मतलब रियल मैड्रिड, एक अजम्पशन इसमें बोल देता हूँ कि मान लो कि रियल तो वैल्वर्डे को भी अग्री करना चाहिए ना भाई। ये मतलब देखो ऐसे नहीं होता है ना मेरे भाई। तो इंद्रनील addressed it, watch the whole interview. um, he said a lot more than the pitch was dry, but agreed. See, that's the thing, right? Social media उतना ही पढ़ना है जितना हमको अच्छा लगे, ठीक है? उतना ही पढ़ना है जितना। यार बाय द वे देखो, गाली गलौज करोगे तो ब्लॉक कर दूंगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, मतलब नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, बैंटर करना है करो, नो इशू एट ऑल, हम वी इनकरेज इट। गाली गलौज करोगे, आई ब्लॉक, लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है? इट्स ओके निधि, बियर पे बातचीत है, चलता है। नहीं बियर नहीं, बियर पे तो चलती है मतलब गाली। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ऑल हाँ, गुड। वही बात यार, देख सैंचो, फ्रेंकी का जैसा जो सिचुएशन है यार, ही हैज टू अग्री टू कम ना भाई, वो बार्सिलोना में रहना चाहता है। और जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है लपोर्टा की बातें सुन के, बार्सिलोना भी उसको रखना चाहता है। तो मतलब कैसे खरीद लोगे ऐसा प्लेयर जिसको, जो बिकना नहीं चाहता है और जिसका क्लब उसको बेचना नहीं चाहता है? ऑल्सो फ्रैंकी के बारे में एक और बात, मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर वेयर the team would have to play to his strengths, so we would have to adjust for him rather than him adjusting or him coming in and just playing for us. मतलब प्रोफाइल भी सही होना चाहिए। So I don't think Frankie is a good fit for us. मतलब Chelsea maybe yes, United of course he's going to be like a really good fit for them. मतलब अगर they get him, it's going to be a really big signing and it's going to work out positively. लेकिन I don't see Frankie fit in in this Liverpool team. Absolutely not. बट जूड बेलिंगम राइट प्रोफाइल है ऋत्विक? 100%, 100%. Why? Like, can you tell us why? Because तो I mean, if not, I don't think हमारे सब viewers watch Bundesliga week in week out. तो So can आई you मीन explain us that? बेसिकली वी नीड समवन, मतलब कोई जो who is involved very much in attack, who is good at connecting plays. मतलब Bellingham is no big, he's not the elite passer that we would like imagine. He's not like very
like the complete player. He's not. लेकिन he's like the perfect right-sided midfielder जो ball carry करेगा. मतलब attack में he will link up well. He will get into the box in goal-scoring areas. He'll get some goals. He'll get assists. So in that aspect, from what we as like what Liverpool ask of our right-sided midfielder, and he will cover ground as well, so that when we are on the end of a transition, we are on the end of a counter attack, he will chase, and he is someone who is good at like all those stuff. I mean, he's still very young. There is some aspects of his game which could improve. I think passing is something where I think he could get better. लेकिन already उसमें जो है that is much better than what Harvey Elliott offers for us on the right center midfield role. I think for us, for Liverpool, Harvey Elliott is the best right-sided midfielder at the moment. मतलब जो in a 4-3-3 who can play on the right side of midfield, because he links up really well matlab, with Salah, Trent and Elliott. You see how when Trent goes in, Elliott drops to the wide areas, and you see him linking up nicely with Salah. और उसके पास technique भी है. He's not quick. I mean, he's not quick, but he has immense technique. He has in-game intelligence. और उसके ऊपर he also works hard. You can see him chasing, although he's not physically there yet. You can see him chasing people when we are on the counter, when we lose a ball. So I think he's probably the best player we can play at the moment on that right side. Bellingham 2-3 level ऊपर है उसके अभी. 2-3 level probably is me exaggerating, but Bellingham is obviously the best player that we can get at this moment to fix that issue that we have in midfield. Yeah, Dean, definitely Bellingham is worth it. जैसे अभी explain किया ऋत्विक ने कि he's really good, he really fits our profile. But the reality is यार कि डॉर्टमंड ये समर नहीं बेचना चाह रही है. तो अगर वो नहीं बेचना चाह रहे हैं, जो आपका सेलिंग क्लब है, apparent selling club, if they're not willing to sell, what can you do, right? अभी और यार देखो मिडफील्ड के बारे में मैं एक चीज बोल देता हूँ. मतलब ये आई थिंक क्लॉप वेरी वेल नोज कि वी नीड अ न्यू मिडफील्डर. दैट वाज द रीजन ये सीजन जब स्टार्ट हुआ था चैंपियंस लीग के जस्ट बाद, वी वेंट फॉर चुआमिनी. वी हैड अ डील अग्रीड फॉर हिम, बट अब एम्बापे वाला डिबैकल हुआ एंड देन मैड्रिड केम इन swooping फॉर हिम एंड ही वांटेड टू गो टू मैड्रिड. तो वही है ना यार, देखो प्लेयर को जहां जाना है वो वहां जाएगा. तुम जबरदस्ती तो नहीं ला सकते हो ना प्लेयर को. तो जूड बेलिंगम का वही सीन है यार. बेसिकली देखो वो नहीं आने वाला है प्योरली बिकॉज द क्लब इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिम, है ना. संकेत का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू निधि भाई. नॉट क्रिटिसाइजिंग ट्रेंड, यू कैन क्रिटिसाइज ट्रेंड यार. आई थिंक मैंने तो ये स्ट्रीम में भी बोला यार कि ही वाज द मतलब along with Henderson he was the worst player on the pitch. But thoughts on his defensive actions, मैं इसमें मानस और ऋत्विक का भी थॉट्स लूंगा, मगर मैं इसमें बस ये बोल रहा हूँ. देख संकेत, ट्रेंट इन अटैकिंग ट्रांजिशंस ना, ही इज नॉट सेट अप टू डिफेंड. यस, देयर आर सर्टेन मोमेंट्स जहां पे ट्रेंट अच्छा डिफेंड कर सकता था. जैसे कल उसको पता ही नहीं था कि मिट्रोविच इज ऑन हिज शोल्डर, राइट. ही थॉट कि कौन था वो फुलम वाला प्लेयर जो बीच में खेल रहा था, हु मेड अ रन, राइट. एंड ही कम्स इन एंड उसको लगा कि ही इज लॉस्ट हिज मैन, इसने कर लिया डिफेंड, बट ही वाज नॉट अवेयर कि मिट्रोविच इज राइट ऑन हिज शोल्डर. तो देयर आर सर्टेन मोमेंट्स दैट यू कैन पिक फॉर. बट वैसे तो यार मतलब आप एक दो मोमेंट्स तो किसी भी प्लेयर का निकाल सकते हो. देखो ये एक बहुत बड़ा मिथ बिल्डअप हो गया है कि ट्रेंट कैन नॉट डिफेंड. इट्स नॉट सो मच अबाउट ट्रेंट कैन नॉट डिफेंड यार. मैंने संकेत, जब तेरे को याद होगा हम लोग ने स्ट्रीम किया था चैंपियंस लीग फाइनल में भी, द मिस्टेक स्टार्ट्स फ्रॉम हेंडरसन ट्राइंग टू प्रेस मॉडरिच, एंड देन फिर वो मॉडरिच बॉक्स में ओवरलोड करते हैं. चल उसमें नहीं घुसेंगे उतना. आई एम नॉट सेइंग ट्रेंट इज परफेक्ट एट डिफेंडिंग, बट आई थिंक दैट in a lot of moments जहां पे he is criticized for being a bad defender ना, वहां पे he is not even set up to defend in those situations. मानस तू क्या बोलता है? But yesterday for the first goal, the criticism he got is justified. मैं Like बोल रहा हूँ worst player on the pitch. मैं तो no, बोल रहा हूँ worst player. I don't know about that. But for the goal, I was just shocked seeing at the replay कि भाई मतलब वो उठा ही नहीं. Like he didn't even उसको attempt आइडिया to. ही नहीं था. उसको Wait. आइडिया ही नहीं था कि मिट्रोविच इधर No, है. but so now
that is not a trademark of a good defender. Simple सी बात. And I'm not a football expert here, but if you have that mindset, if you're a defender, you are. I'm not saying कि कभी होता नहीं है ऐसे, you lose a mark, lose your mark, lose your player, whatever. ऐसे obviously होता है, but yesterday का goal was frustrating for me. Like, and I am a Trent admirer. I understand at times Trent is not in his defensive position because वो आगे रहता है, you know. So वो situations में I am always, you know, like thinking, okay, Trent ka first thing is to go up front. He contributes so much up front, but he was there. It wasn't that he was not in that position to defend, which angered me even more. I was like, bhai, you just had to, like, it wasn't even like heavily contested where there were two people, three people around him. Like, I mean, again, it's Premier League, it's हल्का tough, उतना it's tough, and like he is a world class player, so I'm not gonna say कि ये है वो है ये है वो है. But yesterday का the first goal, I was disappointed with Trent's defending. Rithwik, your take on the Trent defending saga and yesterday. मतलब I'll start with yesterday. मतलब yes, he could have done better. लेकिन भाई, just think of how many fullbacks could have dealt with Mitrovic's physical presence in the back post. मतलब, I mean, you could cut him some slack for yesterday. Like in general, मतलब, I mean, I've debated about Trent in a lot of WhatsApp groups, like defended him a lot. I mean, there's two sides. मतलब, people think that a right back should be really good at defending. It's fair, but abhi it's no longer. I mean, teams no longer just pigeonhole. You don't just pigeonhole players into positions anymore. मतलब systems है, roles है team में. It's no longer right back is just right back. No, मतलब right back can be in central areas. Cancelo plays like left back, मतलब inverted full back है भाई वो. मतलब just look at where he plays most of the time. मतलब Diogo Dalot for like United, he's been like moving towards central areas. Abhi Ten Hag likes to play with inverted fullbacks. Arteta also likes to play with inverted fullbacks. So, मतलब roles is what is important now. So, in possession, with respect to creativity or in position, there is no right back that's better than Trent Alexander-Arnold in the world. There isn't any. But defensively, it's equally fair to say that he has weaknesses. He has like really pretty bad weaknesses. मतलब awareness is one. That's something that I think he could work on. मतलब वो एक weaknesses है. But the problem with people is like वो he makes a mistake and they say oh, he can't defend. मतलब बस क्रॉस पैन करता है. और दूसरा एक सेक्शन है जो बोलता है कि नो ही इज लाइक द एलाइट अटैकर, ही इज द बेस्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ. मतलब यू कैन ट्रीट बोथ द साइड्स, you can just consider both the sides and think, and just think of what he offers in position. Do you think any other fullback does that? No. मतलब De Bruyne levels of creativity is what he's been delivering for the last 3-4 seasons. मतलब De Bruyne in midfield and Trent like as a right back. It's fair to expect him to like defend to the bare minimum sometimes in 1v1s etc. and be like back post में awareness. Champions League final का जो goal that Vinicius scored, Trent could have done better obviously. मतलब it's not just his fault because there was a lot more involved in that move where Robo pressed and we were like left completely open and stuff. Lekin he has his defensive like weaknesses. मतलब it doesn't mean that he can't defend, bro. मतलब like you mentioned, his role is not something that just go and defend Trent. मतलब bhai, he's mostly in the final third of the pitch and mostly in the central areas these days. And when there's a counter, when ball goes to the wide area, मतलब we have someone else to cover there, and that's when he tracks back. अगर वो track back भी नहीं कर रहा, we have someone else to cover that space. So you can't just randomly say कि भाई Trent doesn't defend. He's always somewhere else. मतलब that's how Klopp wants a team to play. It's not Trent's fault. It's how the system is designed. तो और वही एक चीज है कि यार देखो, बहुत लोग ये भी बोलते हैं और बोल रहे हैं स्ट्रीम पे कि मिडफील्ड में I don't think so. See, देखो, in a lot of our attacking moves ना, you last season भी देखा होगा तुमने कि he's cut in and Henderson is going wide and he's almost like an attacking midfielder in those positions
when we have the ball. बट ट्रेंट को अगर आप मिडफील्ड में मूव करोगे ना तो आपको पूरे टीम का रोल्स चेंज करना पड़ेगा. I don't I don't think it's a very good idea to move Trent into midfield because that will lead to too many variables. I don't I'm not in favor of Trent moving to midfield ऐसा. तो By the way, Sachin Walia, thank you so much, yaar, for your kind words. There are many YouTube channels, but for you to say that, we really, really मैं appreciate it. देखा नहीं. Like, Thank you Sachin. Thank you. He's a Forest fan that too. really? Yeah, उसने पिछले बार भी आया था, वो बोल रहा था he's a Forest fan. Brilliant, brilliant. So that's nice. Yeah. Yeah. They're like a pretty nice team this season. बहुत सही Yeah. players है, good and young players. मतलब former Liverpool player Taiwo, Avoni, Nico Williams. Nico Williams. Brendan Johnson is amazing. Jesse Lingard. जैसे लिंगार्ड. भाई लोग स्ट्रीम खत्म करते हैं, काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं. मिडफील्ड के बारे में हमने काफी बात की, काफी ज्यादा लोगों ने बात की, और बियर पे बातचीत वापस आ गया, राइट. सॉरी, इस बार मैं और ऋत्विक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. नेक्स्ट टाइम पक्का. नेक्स्ट टाइम उनके बिहाफ पे मैंने ये जायंट ग्लास खत्म किया है. तो ऋत्विक तो वैसे भी नहीं पीता भाई. तो वही है बॉस की. देखो यार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. अभी बहुत सारे मैचेस हैं, अभी बहुत गेम्स बचे हुए हैं. काफी ज्यादा. अभी तो चैंपियंस लीग का ड्रॉ भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो भी 25 काफी तारीख को. हाँ 25 तारीख को है. मजा आएगा यार. देखो ऑब्वियसली देखो, कोई ये नहीं बोल रहा है कि ये टीम में इश्यूज नहीं है. एज मेनस एंड द मॉन्क हम कभी ये बोल भी नहीं रहे कि हमने यार कि टीम में कोई इश्यूज नहीं है. हम तो इनफैक्ट हमने एक मिडफील्ड की एक और स्ट्रीम की थी, वो चालू ही. थैंक यू सो मच अनुराग. वो चालू ही हमने करके बोली थी कि मिडफील्डर वुड इम्प्रूव दिस टीम. बट एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, देखो यार, क्लॉप का एक सिस्टम है. ही विल नॉट साइन एनीवन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, या स्टॉप गैप. अभी उससे आप डिसएग्री कर सकते हो, एंड वो इज अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, बट दैट्स जस्ट हाउ दिस क्लब वर्क्स. अभी उसमें अच्छा है बुरा है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं. दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट फुटबॉल एंड ओपिनियंस की. ओपिनियंस हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि हमको इतना भी ज्यादा डिमोरलाइज होने की जरूरत है कि अब कुछ नहीं हो सकता है. ऐसा नहीं है यार. आई एटलीस्ट आई डोंट थिंक कि हम लोग खत्म हो चुके हैं और वी आर नोवेयर नियर सिटी एंड ऐसा मुझे नहीं लगता है. आपको अगर लगता है तो ठीक है, दैट इज आल्सो योर ओपिनियन एंड आई एक्सेप्ट एंड आई अग्री. आई डोंट अग्री बट आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन. बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ things to look forward to in this season. Midfield also. ऋत्विक क्या बोलता है यार? Absolutely, Nizi bhai. I was really frustrated कल के ड्रॉ के बाद. Obviously everyone would have been. But thinking of it now, it's हो गया है, and it's just the first game of the season. We still have like a long way to go. City 38 games जीतने नहीं वाला. They're not going to get 38 into 3 points. 114 होगा, right? They're not going to get 114 points. So there's still like a long way to go, and it's not like we are some average team. Yes, midfield में issues है, but we still have enough quality to get through it and win games. Or kal, even with Milner, and even if we didn't have like Thiago yesterday, we could still have won. The problem was we weren't up to the mark with the players that we have. So that's definitely going to change next week, 100%. If Klopp sees that kind of a performance again, he's going to hook the players off directly. And he's someone who's pretty ruthless at times if things keep on happening, repeating. हमने देखा था मोरेनो के साथ, because he doesn't like mistakes getting repeated again and again.
तो there's lot of good things to look forward to. मतलब trophies के बारे में we'll think, probably we could think about it like later, probably somewhere November या December फरवरी अगर वगैरह में। हम्म तो ठीक है, let's enjoy the season because there's a lot to play for. मतलब बहुत अब एक competition भी बढ़ गया प्रीमियर लीग में. We'll get to see really cool matches like end to end games as well, not a one way dominance. अभी I think there'll be teams who will probably cause problems for Man City as well, so it's going to be interesting. यप यार, किसी का इग्नोर नहीं किया यार। देखो कमेंट्स काफी आते हैं, सारे कमेंट्स हम नहीं ले सकते बिकॉज फिर सारा कॉन्वर्सेशन विल बी अबाउट कमेंट्स। मतलब हम, ऋत्विक आल्सो वांट्स टू से समथिंग ना, तो भाई लोग, बट थैंक यू सो मच, हम लेंगे कमेंट्स और लिवरपूल कंटेंट तो ये चैनल पे बनता ही रहेगा यार। The season has begun. अभी तक हम बोल रहे थे the season is about to begin, but the season has begun. It has not begun on a very good note for us. It has been pretty frustrating, let's be honest. But like the panel here, Manas, क्या बोलता है यार? There's a lot of things to look forward to. Yeah, it can only get better, bro. Like I mean, there's first of all, there Mute is पे no गया। need for such so much negativity. Of course, the performance against Fulham was bad, but it can only get better. Like genuinely, मेरे को लास्ट सीजन एक ही गेम ऐसा था जो मेरे को इतना लेवल का फ्रस्ट्रेशन था, वो था लेस्टर अवे। वो मतलब वो गेम मैं देख रहा था, आई वाज लाइक, मेरे साथ में देख रहा था, हम लाइक ये क्या चल रहा है। मतलब सेम मेरे को साल में ना, टचवुड अंडर योर्गन क्लॉप, साल में एक टॉप दो गेम ऐसे होते हैं। व्हेन वी वन द चैंपियंस लीग, वो नापोली अवे लीग स्टेज, ग्रुप स्टेज में एक गेम था, मेरे को दिमाग में हमेशा वो याद रहता है। लास्ट सीजन मेरे को लेस्टर दिमाग में याद है, और मैं सिर्फ यही सोचूंगा कि हम हमेशा बाउंस बैक किए आफ्टर सच रिजल्ट्स, और Yeah. दिस इज प्रॉब्ली द वर्स्ट वी विल प्ले दिस सीजन मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग कि हम मैच हारने नहीं वाले हैं, हारेंगे मैच, होता ही है, बट इससे बुरा हम नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से। आई थिंक ये सेफ अजम्पशन है कि इससे बुरा हम नहीं खेलेंगे। तो या मैन, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट 3 पॉइंट्स अगेंस्ट पैलेस at home. Darwin Nunes probably will start, probably he'll score a goal or two, and then things will be good. And then Monday night. immediately we have United after that. क्या हुआ? नहीं मतलब it's actually a good time to play United early this season. वही, when we play United, like if we get a favorable result, then again the morale, the camp is happy. So it's a long season, man. Just have fun, enjoy the ride. Not a good start, but it can only get better, man. बीच में वर्ल्ड कप भी देखना है ये सीजन के, तो काफी मजा आने वाला है। Huh. And Aman Sheikh, yes, I am very excited. I will be presenting Madrid versus Frankfurt. I think Real Madrid will win. You've asked for who do you think will win? मेरा hunch ये है कि Real Madrid will win. आपने बहुत बार पूछा है, तो मैं सोचा रिप्लाई कर दूं। चलो बॉयज, आई एम मेकिंग अ मूव, आई एम हम, एब्सोल्युटली battered भाई, मैं बहुत हाँ थका हुआ हम हूँ। भी खत्म ही कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच whoever joined in. It was a lot of fun. काफी मजा आया बात करके। वीडियोस आते रहेंगे क्रिस्टल पैलेस के पहले। वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल प्लान फॉर यू, सो स्टे ट्यून। मेनेस इन द मॉन्क, ये सीजन there is going to be a lot of fantastic content coming about Liverpool from Menace in the Monk. Cheers and up the Reds. Up the Okay, fucking Reds. guys.